Do me a favor, don't smash the thumbs up button. Please, be gentle with it. Poor tiny little thumb down there, just look at it, begging to be gently clicked. In all seriousness though, if you find yourself enjoying this video, I need your help. It took me over a year to gather all this footage and assemble it into a video. And while I enjoyed every second of that, I would be honored if you would help me out by subscribing to my channel. It will help nudge YouTube to compensate me a bit for my time. And if you find yourself wanting to see more videos like this one, I might be able to move away from my day job and toward making more content like this with the support of anyone generous enough to head over to my Patreon page and support me there. Any little bit helps, and the link is in the description. And there it is. Ain't she a beaut? It is a humbling thing to spend the better part of 3 months of your life preparing a site for a construction project, and then in about 5 hours, a team of 4 dudes goes ahead and they put this impressive thing up. They made it look easy. This is a standard ladder. It unhooks. Technically, you can flip it around and put it down inside of a manhole. There's an access panel on top we're going to see in just a second. Over here is the overflow. It's a big old pipe because you don't want that to restrict flow. If you got water flowing in, you want it to be able to get out easily so it doesn't put any pressure outward that the tank's not designed to handle. And then down there is what they call the outlet. That's basically just the standard fitting that will feed water to my filters and pumps. I ultimately plan to have my ladder here that will make climbing this a lot easier. There's the manhole, and there is where the water goes into the tank. Just a few days after the install of the tank, we got a heavy rainstorm, and the water coming off the roof hit the sand, and I wanted to show you guys what that looked like. When water falls off of the roof of the tank itself and lands down here in the sand, it creates a pattern that risks undercutting the actual surface of the wall, which is right here. And if you cut underneath that, the wall becomes unstable. So we're gonna lay some rocks to act as kind of a dispersing structure so that the water doesn't splash into the sand. Some of y'all may have noticed this ladder in many of the previous scenes. I picked it up at a local recycling center. So I just slapped a coat of silver paint on it so it kind of matches the tank. I just used some pavers I had lying around to kind of level the thing out. Now it's time to weld up a custom pump house along this wall here, and this outlet is what's going to feed the water into the pumps and filters inside of said pump house. The dimensions I'm going for are basically the height of the tank. I'm going about 10 feet wide. I'm going to bring it out about 3 feet, and ultimately I plan on insulating the sides and the doors. I'm going to leave the back wall basically connected to the tank, no insulation in between. My reasoning being, in South Texas, we only get a couple of freezes a year. This huge volume of water, assuming the tank is relatively full, will be a nice good thermal mass which should never freeze. And so by leaving the pump house in continuity with the water tank itself, it'll actually prevent the pumps and filters inside of the pump house from freezing. At least that's my hope.
All right, so I wanted to bring us out a warp speed here to give you kind of a post-facto explanation of what I've been building. This here is very obviously the pump house. I got a door on each side. Up top, we got a little redneck lock made out of PVC. As y'all could see, I got pink insulation, 1 inch thick. Got that at the orange store, along with the metal siding, or the metal roofing technically, that I used for siding. I got everything as insulated as possible, and I used pipe insulation to seal the roof material against the tank itself. A design consideration I had to keep in mind was to make sure that any of the metal from the pump house itself, I did not want it actually touching the tank wall, because that would lead to galvanic corrosion, since a lot of the stuff on this pump house I'm not painting and it's gonna rust. I wanna make sure that it rusts here and it doesn't sacrifice the anodes that are buried underground as part of the tank install. And the whole point of all this was to have this tank outlet come to pipes. That's gonna go to a pump, a pressure tank, and a series of filters. And then the filters are going to be mounted on this back struts on the wall, and you can adjust these struts to whatever dimensions you need to make mounting the filters easier. Going back out the other side of the pump house. Last thing I got to do is build a small extension coming out here. I'm going to have one leg go down. I'm just trying to keep my walkway nice and wide. That's why I scooted that ladder as far over as I did. And I need the extension because when I go to clean out the filter underneath that black plastic cap, I want to be able to stand safely and soundly on a platform while doing it. So we're going to go back up in a time lapse to see all that get done. And it's painted. But there it is, all said and done. You almost can't even tell I did anything. And this is the plastic cap through which a PVC pipe will pass on the center point, and that'll dump the water into the tank. This is a stainless steel filter. You clean out leaves and small debris from this every once in a while. So the next steps here are going to be installing electrical wiring, pumps and filters into the pump house, and then doing some gutter modifications and PVC work to get the water to convey from the gutter of my workshop and the gutter of my house down through the ground in an underground trench. And then that PVC pipe will pop out of the ground right next to the ladder here, and then ultimately dump down through a hole in this cap and pour through the filter. But first, it might make sense to do a simple lab bench demonstration of how exactly that works. This is my lab bench. Yes, I'm using a child's toy. Don't judge me. So there are several different arrangements that can be used to get rainwater from your roof to your tank. One of the simplest ways would be to just put the tank under the downspout of your gutter. This isn't ideal though, because it means your tank has to be right up against your house. Another way is for you to build something like a ramp for the water to flow down, often called an aqueduct. This allows you to put the tank further away from your house and still use gravity to fill the tank. The downside of the aqueduct setup, though, is that you have to build a large, somewhat complicated structure above ground. The aqueduct structure also takes up usable yard space. The third and most commonly used setup involves a tank located some distance away from your house and the use of a U-shaped PVC tube. The U functions much like a siphon does. The horizontal part of the PVC U is buried underground so that it's out of your way. For this to work, two big things have to happen. One, the PVC tube has to have watertight joints. And two, the vertical leg that flows into the tank has to be shorter than the vertical leg that comes down from the gutter. As long as the outlet that feeds into the tank is lower than the height of the inlet that comes from the gutter, the water is essentially flowing downhill into your tank and no additional pumps are needed. A height differential of at least 18 inches is advised to provide enough force to push the water into your tank. Let me show you how this looks in real life now. Here we have the PVC fittings that are most commonly used. As you can see, we use long sweep tubes
so that it doesn't build up a lot of resistance to flow. 4 inches is a very common size, much more affordable than the 6-inch apparently. And to anybody looking to buy this stuff at home improvement stores, it's commonly called drain pipe or sewer pipe, and the thickness of these walls is called Schedule 35. So with the use of a trenching machine, we cut big trenches through the yard and buried a network of 4-inch pipes in said trenches. 4-inch pipe is apparently kind of an industry standard. Like I said a second ago, 6-inch pipe is significantly more expensive, so it's much cheaper to use 4-inch wherever possible. After we plumbed all the downspouts into a common pipe that goes up to the inlet in the top of the tank, we got a heavy rainstorm. This storm made it apparent that we needed to make some modifications because there was a ton of overflow coming off the tops of the downspouts rather than flowing through the pipes and up into the tank. So after some thinking, I concluded that there were 2 big problems. 1, the pipe diameter was too small, and 2, there were too many bends. As you can see, there's a 90, a 45, another 45, and then up top here, there's another 90, another 45, and then another 90 going in through the cap of the tank. Me and my installer concluded that was too many turns in too small of a pipe. So the solution we came up with was to increase the size of this pipe to a 6-inch pipe, and then have 2 independent pipes go into the cap. To do that, I had to weld some custom metal stuff, so let me show you what I came up with. I got some stainless steel pipe on McMastercar.com. I went with an 8-inch size, a 6-inch size, and a 4-inch size. Each of these pipes is about a foot long. Then I took the black plastic cap that's the lid to the tank, and I marked the circumference of the 8-inch pipe on top of that. And then I cut a hole in it, that exact size. Then I swapped out the caps. The one that had the 4-inch pipe went away, and the one that had the new hole cut in it went in place. Then it was time to line my pipes up. I passed the 8-inch pipe up and down through the hole like a chimney, and I had to line up the 6-inch and the 4-inch pipe you see me holding here at the right angle to where I could have the up pipes feed water in through them. So the trouble I was up against is I couldn't run the 4-inch pipe and 6-inch pipe parallel because the added width of them would be too big to fit into the 8-inch pipe. So I had to plumb the 4-inch pipe in at some angle. If I did a right angle like this, it made this long length that had to run over the lid of the tank, and that was kind of silly. So I had to wind up figuring out a way to cut custom cuts into these pipes to where I could line them up at an angle just about like this. And so I came up with a pretty neat trick that involved lasers. It was really fun. I made an independent video for that. But let me show you the gist of what I did. So using a special type of paper called cyanotype paper and an ultraviolet laser, I was able to kind of make a template by wrapping it around the pipe and then running the laser along a template pipe that was the diameter of the 8-inch pipe, and it basically burnt the image of the tracing onto the smaller pipe, and then I was able to cut the custom shape and weld them together. I wound up having a very nice joint when it was all said and done, so I was very happy with the results. Then it was time to swap out the wire in my MIG welder to stainless steel wire, and then I went to town welding these things together at these custom angles. And this is the new manifold in place. I went on Amazon and I got a rubber cap that fits on top just to keep bugs out. And then you're able to buy these pre-made sock filters that I put in place with some stainless.
stainless steel mesh that had a custom hole cut in it, and this little stainless pipe here just holds the filter in place. Here you can see rain flowing into the pipes. And this is an image of when I'm cleaning out the filters. You just pull the sock filter out and you can clean off the gunk with your hand. And then you put the sock filter back and you're good to go. And this is how it all wound up looking. I was pretty pleased with the end results. Take note here of where I flared the 4-inch pipe up to the 6-inch size a little bit before the turn to go upward into the tank. Like I said, we did this to reduce resistance to flow significantly in the up pipe, and so far it's worked very well. And since I'm a boots and suspenders kind of guy, in the event of an overflow, I didn't want water spraying out of my gutter and then soaking my rocket mass heater on my porch, so I came up with this idea to divert the overflow safely down to the ground level without making a mess. First I cut the original pipe. Then I glued on the joint, and with the use of a rubber joiner, I was able to hook up this custom PVC piece that I made that looks a little bit like an elephant trunk. And in a second here I'll show you how it works. So this is the final overflow piece in place. Normally this green pipe is full of water at a level that lands right about here, 27 inches down from the gutter. In a heavy rain event, as resistance to flow builds, this column of water rises. All of the downspouts on my house contain a water column of equal height since they are all connected to each other. As the water here rises and spills out of the side branch in the sanitary tee, this path through the elephant trunk diverts the water down to the ground and should prevent all 4 downspouts from spraying like sprinkler heads. If it works, you will never hear about it again. If it doesn't work, I will post a follow-up video to warn you all that this idea failed. And if you want to be alerted to these follow-up videos, you should definitely click the subscribe button and turn on alerts in YouTube settings. This is where the water comes out, down here. It just flows onto the ground. And this little branch is a tattler device that tells me if the pipe overflowed during a rain event, even if I'm not here to see it. Droplets of water collect in this cap. Now that we've built a system that can deliver rainwater from my house and workshop roof into the tank, it's time to talk about how we're going to get that water from the tank into the plumbing inside my house. Let's follow the journey water makes going from the tank, through the pipes, and into my house. First, the water has to get out of the tank through this bulkhead fitting. You'll notice it's at the very bottom of the tank. Despite all my screen gutters and pre-filters, there is a small amount of sediment that inevitably gets into the tank and settles down to the bottom. Because the occasional leaf debris may float on the very surface of the water, the cleanest water zone winds up being about 6 inches below the surface of the water. If you pull water straight off the floor, you are likely to suck up sediment and clog filters very quickly. So I plumbed up this special floating filter that pulls the water exclusively from 6 inches below the surface, rather than sucking silt off the bottom. You can make your own out of all sorts of clever parts, but I was feeling lazy, so I just bought this online. As soon as the water is out of the tank, it goes to the pump. There are many different types of pumps one could use. Some require a pressure tank and some do not. To keep things affordable and powered by 110 volts, we went with a pump that does require a pressure tank. Which brings us to this little blue guy here, the pressure tank. Its job is to act as a pressure reservoir that prevents the pump from having to cycle on and off super frequently. Once the water leaves the pressure tank, it's onward to the filters. These filters get progressively finer as water moves toward the house. The first filter is called a spin-down filter, and it uses inertia to fling the larger particles out of the stream of water and into this collection bowl. The finer filters are up here. There's a 5-micron pre-filter. This removes small debris and some of the larger bacteria. Then there's a 5-micron carbon filter that removes any chemical contaminants. And the last stop is a 0.2-micron electrostatically charged nanofiber filter. This removes even the smallest bacteria and also removes 99.999% of viruses, which are the smallest potential pathogens. In my house, there is a strict rule that we only drink or cook with water coming out of our reverse osmosis filter, also called an RO unit. The RO filter inside the house filters down to 0.0001 microns, which is smaller than the smallest known viruses, which are about 0.02 microns. If you don't have the same RO filter rule in your house, you should add an ultraviolet sterilization unit to make sure that any potential viruses are killed before they leave the pump house. I wanted to avoid that in my setup because I didn't want to have anything in here that requires power other than the pump itself. But do your own research to determine what you need, and always follow codes and laws. At this point, the water goes underground and runs through the same trench that the gutter pipes were buried in. The water pipe then joins with a spigot pipe just outside my workshop. Since this pipe connects to the house plumbing, the water basically enters my house from here.
We placed a backflow preventer here to prevent city water from accidentally flowing into my tank in the event that I ever turn on the city water up at the street. Once the rainwater joins this pipe here, it feeds into all the pipes in my house and it flows out of every faucet, toilet, and shower head. A safety feature worth mentioning is the fact that we installed a backflow preventer out by the municipal water meter that makes it impossible for my rainwater to flow into the city plumbing. This feature is both logical and required by most municipalities. It's one of the many safety mechanisms aimed at keeping the city water clean. This little guy also has to be inspected on an annual basis to keep up with the rules. And that about sums it up. Believe it or not, plumbing your house to rainwater is that easy. Was? That easy? I want to give a big thank you to Jeff for helping me through this process. He put in a lot of hard work and he helped guide me through everything that I took part in. If you're interested in getting a tank like this, I'll leave some information down in the description of this video that'll help get you started. I think the world would be a better place if we all felt a stronger connection to it, even people who live in suburbia. Hopefully, this video demonstrated that you don't need to move to the boonies to be a boon. Rainwater collection is possible anywhere with a roof and a yard. If you enjoyed this video, please remember that I can't keep making them without the support from folks like you, so please click all the thumbs and subscribes, and maybe even head over to Patreon to see if you want to help me spread this message by becoming a personal donor to the cause. Thank you for watching Suburban Biology. I'll see you on the next one. If you're around my age, there's a good chance your entire life you've watched your dream of owning a house go from what seemed like a near certainty to completely out of reach for the average person. And to be honest, I'm tired of letting that get me down. In this video, I'm taking my first step towards moving out of my parents' basement and building something I've been designing for years. A house with no fixed location, but no compromise on quality. A place to finally call home. So I'm starting off this build with a good custom-built trailer that's specifically made for tiny homes. This trailer is over width at 11 by 30 feet, and I decided to go over width because I'm a pretty big guy, and by the time I closed in a 8'6" room, I'd barely be able to lay down horizontally. Plus, this is going to be a fairly big unit that's not really made to travel. It'll just move when I move, which will be like every few years, so it's not that big a deal to get a wide load permit. The trailer has three 7,000-pound axles and weighs about 3,000 pounds itself, which gives me 18,000 pounds to build my home on, which should be more than enough. So the first thing I'm doing is cutting off a couple of these stabilizer jack receivers. This is going to be the front end of my tiny house right where the door is, so I'm going to move these over to the side, and I'm not going to go into a ton of detail on this because I could have just ordered it right from the beginning. But basically I'm just cutting off this receiver with a cutoff wheel on my angle grinder, and then I'm welding it onto a section of this 3" by 1/4" square tubing, and then welding that onto the frame.
Then I just use some rust primer and paint, and that's good as new. Now on to the actual build. I have this 2-inch rigid foam insulation that I'm going to cut up to insulate this floor. So I cut this out using a rip jig with my circular saw. As well as just some good sharp knives. So I was making sure to cut them pretty snug, and then I'd mallet one piece into place, and then I'd use some expanding foam to seal around all the edges and act as an adhesive. And then I'd hammer in another section of 2-inch foam until it was level with the floor framing. And I did this along both sides of the trailer. Hello. Before I add the insulation in the center, I have to raise Bro. up these ribs to be the मुझे- same height as the rest of the floor. So I'm just using अब बोलो ये क्या हुआ? Bro, मुझे ADM तक drop कर देगा क्या please? EDM, what is that? Oh yeah, sure, back to. Yeah, you can open your map. Okay. Oh yeah, one second. Oh, it's Thank you locked so now. much, brother. Can you walk EDM now? Oh, that's EDM, okay. Yeah. What happened to your car, bro? Like, are you new to the game or like? You mean the city? No, I'm not new. I'm just obeying the rules, bro. Okay. Didn't So, wanna... are you employed? Are you employed in? Are you employed or? Yeah, I'm mechanic. If you see the number plate back there, Oh, mechanic. yeah, Oh. it's a TLMC. I have cars, but I don't want to use them. You know? Like, if I get into a trouble, they just seize them. You have what? I have cars, but I don't want to get into trouble. Oh, okay. So maybe I think your number plate is registered in the PD department. I think maybe you have done something Oh no. wrong. Is it because of that or? No. Okay. Just enjoying. So what are you doing right now? Like you're just roaming here and there? No, it's classified. I can't tell you. Oh yeah, sure, no problem. Huh? This is a new EDM, right? Oh yeah, thank you so much, brother. Okay. Really appreciate it. Thanks. Bye bye. using my table saw to cut up some 2x6s into these 2-inch sections. And then I'm basically just adding these onto the ribs as an extension so that all the framing's sitting at the same height and is good to take some subfloor. I fasten these into place using some wafer head tapping screws. Now before I add in all these ribs, I have to add in a couple pipes in the floor that's going to be the drain for my kitchen sink, bathroom sink, and shower. So I just have some standard 1.5" ABS piping, and I'm using some yellow ABS cement to glue on some elbow fittings and just extend these pipes so that they're poking out of the floor so I can tap into them later. So I sloped all of these pipes down to one point, which will be under the shower, and then I cut a hole. जी सर हेलो Bees hamburger steak and 20, what's it called, the chocolate milk. ओके 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 जस्ट अब बहुत आ रही है
I'm gonna do this. Just take the hint, alright? Give it back. Alright. आवाज ही आ रही है आपकी clearly like इस हेलो। जी एक बारी सर इनसे पूछ देंगे कि इनको हॉट चॉकलेट चाहिए या फिर लवली हॉट No, चॉकलेट। no, hot chocolate, hot chocolate. ओके। Can you give it back? आपके पास वो हो रही है अटक रही है. सन्नी सर देख रहे हैं हम Thank you. हमारे आते ही आपके कस्टमर बढ़ गए। अरे भाई जंक फूड खा खा के तंग आ गया हूँ मजाक से हट के. It's better this way. Can you hear me, guys? सर कैश या कार्ड? Card. No, cash कितना हुआ है वैसे? हुआ कितना? जस्ट अ सेकंड, मैं अभी बता देता हूँ। इट्स 12,000। 12,000. Can you like do 9,000 on the cash and then the rest on the card? वो नहीं हो पाएगा सर, एक ही पेमेंट कट पाएगा ना, दैट्स व्हाई। Do the card then. जी जी। सेंड सर। Yeah, there you go. Yes sir, I'm keeping it in the tray, just a second. No worries. Take your time. जी सर, उठा लीजिए। थैंक यू सो मच। नाइस डे। Yeah, you too, bud. 1 second. I just need to grab it. Alright, have a great day. थैंक यू। Through this steel belly pan, and then this will be the main out for the drain that I can tap into a septic bed or whatever I come up with later to get rid of this water. I just screwed those pipes in place using some steel strapping, and then I'm ready to add the rest of those ribs. Before I get to insulating this, I'm just drilling a weep hole in each section so that any water that gets in here can escape. And then I'm ready to cut up a bunch more foam. So I'm pretty much insulating this in the exact same way. The only difference is this is actually an inch thicker here, so I added this one extra section of 1-inch foam board. I tried to be as exact as I could with the cuts, but there was ultimately going to be some gaps, so I just used expanding foam to seal all those up. And that's the floor insulated and ready for some subfloor. It has an insulation rating of R25, and they usually recommend about R40 for floors and houses, but this is a tiny house and you're gonna have to cut some corners, so whether you like it or not. So now it's time to add the subfloor, and I have these 3/4-inch chipboard tongue and groove subfloor panels. I usually hate working with OSB, and I kind of ordered these accidentally, but they were here and they seemed fine, so I'm gonna use them for the floor anyway. So I marked out and cut my first sheet, and then before I lay this down, I'm gonna spread out some foam construction adhesive along the steel frame. This will just let the wood tack onto the steel a little better and get rid of any creaking floor or anything like that. Then I laid the panel in place, making sure it was perfectly plumb with the trailer, and I screwed it into the steel framing using some smaller wafer head tapping screws. I also added in a bunch of deck screws every foot or so along all of the wooden ribs.
To cut all of my plywood panels, I use this track saw jig for my circular saw. So basically I could just measure out 2 marks with my tape measure and then use the track to bridge them, and then I can just cut right along with the circular saw and I don't have to follow any lines or draw any lines, and it just makes everything a lot faster and easier. So this tiny house build is actually the whole reason I started doing YouTube a few years ago. I was so fed up with the housing market, and the longer I waited, the further I got behind. When I finally decided to pull the trigger on building a tiny home, I had not nearly enough money to even start the process, so I thought, how could I maybe make this worthwhile financially? I had heard a lot of people made some money on YouTube, but I honestly didn't really think it was that realistic of a thing. But I have a background in film production, so I figured, hey, if I'm building stuff anyway, I might as well just start filming it, and then maybe once I start building my tiny house, I could have like 10,000 followers, and then possibly one day, my job would be on YouTube. Now it's time to start framing up my walls. So for framing, I'm just using regular 2x4 lumber, and I first cut up the bottom and top plate for a wall. And then I'd go ahead and mark out all the stud placement according to the blueprint. I'd basically mark out all the jack and king studs for doors and windows, and then all the middle studs I'd just do 16 inches on center, starting from one end of the wall. With all the studs marked onto one board, I'd just use a square to quickly transfer that over to the other plate. And then in every wall, I have a bunch of these studs that are all the same length, so I went ahead and cut out a bunch of those. In this case, it's 7 foot 3.5. By the way, the blueprints for this exact tiny house are going to be on my website for free, and the link's on the description below. I think it's criminal what's going on with housing right now, so I'm hoping this video can inspire some people to think outside the box and find a solution that works for you, even if it is this exact tiny house. With all the studs cut to size, I set them in place, and then I'm nailing all this framing together using a framing nailer and some 3 1/4 inch framing nails. Then I cut up the jack studs and nailed them into the bottom plate and up the stud itself into the king stud behind it. Then I confirm my header size is the same size my blueprint says, which is 6.5 inches. And then I ripped a 2x8 on my table saw and cut it to size. And then nailed in 2 of these boards as the header for my doors and windows. भाई थोड़ा थोड़ा धीरे चला लो यार यार रॉन्ग साइड है यार भाई फिर भी थोड़ा धीरे चला लो यार बच If गया I मैं couldn't nail the header into place through the stud, I would just toenail it like this, and I only put 2 in here, but I would usually put in 3 or 4, and I did that all later, I guess. I also nailed the 2 header boards together using about 4 vertical nails every foot or so down the header, and I don't have a clip of that, unfortunately. One last thing in this wall, I added in these short cripple studs and then the sill plate for the window just to complete out that framing for the window. क्या With that done, Rifle I चाहिए, measured rifle? this rough opening in the window and confirmed it with the spec good. sheet of the window probably 5 times so that I made sure this was right and I wouldn't have to fix it later on. alright come on And that's ये one wall वाली है। complete. Now it's time to नहीं, start नहीं, working नहीं। down the side. So I first made up this super simple wall using some more of those 7 foot 3.5 studs. And then I made up another section of this wall that's a little bit shorter because this is going to be sitting on top of the wheel well. वही बाजार अपना यार चलिए आप मुझे थ्रेट कर रहे हैं यार आप चलिए यहाँ से फिर मैं कपड़े बदल लूँ
This next section of wall is going to be 2 feet higher than the previous walls, and then I also have this step at the bottom where the wheel well is going to drop off back to the bed of the trailer. I also had to frame 3 of these small windows into this wall, so I used multiple headers and some spacer studs to get this done. Then I framed up the last section of this wall, so there's going to be 4 of these sections in total to complete one side wall, and then I'll nail these all together once they're all erected. So it took me 2 days in total to frame all the walls, and that's including filming time, which takes quite a bit longer, so you could probably do this in a day, especially if you had an extra pair of hands. I actually find this part of the build really satisfying because you make a lot of progress within about a week's time, so now I have all of my walls ready to stand up. But before I do that, I'm adding my 4 corner jacks, and I'm going to spend a good amount of time getting this trailer bed as absolutely level as possible. You want this to be level in pretty much every area because the squareness of this entire build depends on a level trailer. Once we put up the walls, we'll be leveling them, and as long as the trailer's perfectly level, the walls will be perfectly square to the trailer then. Next, I just marked out some 1/2 inch ticks to set these walls back a 1/2 inch from the trailer edge, and then I used a chalk line to snap a straight line. Then I put a bit of expanding foam along where the wall's gonna sit as some sill insulation, and started lifting the wall sections into place. You're gonna need a hand when doing this because some of these walls are, I don't know, maybe 300 pounds or so. I'm just temporarily screwing each wall into place using some of these self-tapping screws. And then these will get replaced out with big 1/2 inch bolts once all the walls are up. To support each section of wall, I'm driving a stake into the ground, and then I'm just using a scrap 2x4 to brace up to the wall wherever it's level. And then we just kept installing the wall sections. And in a pretty short period of time of a few hours, we went from just having a blank trailer to something that's getting pretty close to looking like a building. I'll be able to move out of my parents' basement soon. God, that'd be awesome. Where the sections got nailed together, I'd just sink a nail every foot or so. And then I'd come up on the other side of the stud and sink another set of nails every foot or so that there's 2 sets with opposite angles and kind of stitching this together. With all the walls in place and braced, I'm taking out these temporary screws, and then I'm drilling through a 1/2 inch hole, and then using these 1/2 inch stainless steel bolts and washers, and then this nylon lock nut to bolt these walls down. I'd sink the bolts as tight as I could with the impact and then give them one last burst of some man energy. I put one of these bolts probably about every 2 or 3 feet down every wall, which is way overkill, but hey, they're cheap and it's better than these walls blowing off the frame. Now you want to do just one last check that everything's level and make any adjustments if you need to, and that's starting to look like a house. So the next thing I'm doing is adding a second top plate with some more 2x4s.
And the most important thing with these is you want to make sure these overlap the gaps where the sections of the walls join together. This just adds quite a bit more support and kind of ties all those separate wall sections together as one. Now I'm soon going to start framing up the roof, but I first have to frame up one more little section of wall that goes on top of our one end wall. This has some space for a window in it, and it also has structural support to support the ridge beam that's going to sit on top of here. The other end's not quite as complicated, it's really just this 2x4 blocking, but this is raised up to the exact same height as the other ends so that the ridge beam will sit level. And then before I add the ridge beam, I'm going to add in a few of these 6x6 cedar tie beams. These will connect the two side walls together and keep the weight of the roof from bowing out the walls. And I decided to go with cedar even though 4 of these 12-foot beams cost $1,200, which is insane. But they smell and look so good, and they're going to be a pretty monumental part of the finished interior of the tiny house. So to cut these, I just used a regular circular saw and cut along a line on all 4 sides, and then just used a handsaw to finish up that cut. Then these are going to screw into another piece of 6x6 that extends up vertically up to support the ridge beam. So I marked out some bolt holes and drilled them through with a 1/4 inch long drill bit. And then used an 1.5 inch Forstner bit to make some countersinks. As you can hear, it was incredibly windy this day, as it was a lot of days out in the middle of this field, which made this process so much easier. So to mount these beams into the tops of the walls, I'm pre-drilling in another 1/4 inch hole, and then using some of these 9-inch long 3/8 inch lag bolts. That was close. Oh my god. My camera and tripod almost blew off scaffolding probably a dozen times in this build, but that was definitely the closest. Once the beam was mounted, I measured up from the floor to get the exact height of the top of the beam so that I could cut another piece that would extend upwards and meet the exact same height as those blocks we put at the 2 ends that support the ridge beam are at. This is just another step to making that ridge beam perfectly level. Then I set this second chunk of beam in place, making sure it was centered, and used some more 3/8 inch lag bolts. Then I had 2 more of these to make, so I went ahead and started doing that. An important note is you want to individually measure from the floor up to the top of each one of these beams and then make a custom piece to fit the top, because each beam has a slightly different bow to it, and then you can make sure that ridge beam is supported at the exact same level at all 5 points. Now for the actual ridge beam itself, I'm using these 9¼ inch by 1¾ inch LVL beams, and I got some fairly long lengths of this. Now to secure this beam onto the end, I have these 4x4 post caps I'm screwing into the 2x4 blocking, or I'd use some strong tie nails. And for now, I've just got some scrap 2x4s I'm screwing onto the sides of the 6x6s, just so that the ridge beam doesn't fall off the edge.
Then I started lifting the 2 longer lengths of ridge beam into place, and this was quite the job for one person. And of course, as soon as I got it up there, I figured it would actually be way easier to measure this out and cut it on the ground, so I took them down again. So I'm cutting in this indent, and this is for where the roof is gonna overhang over the walls. And I cut this back to be 5.5 inches so that it's just the width of a 2x6 overhanging out past the walls. Then this will just get covered up with soffit and I don't have to cap it or anything on the outside. So this first side of the ridge beam will meet at that center cedar beam. And then I split this second side of the ridge beam into 3 pieces so that the joining points are overlapping. With all the pieces up, I nailed the LVLs together using more framing nails. And I'd do a line of nails about an inch apart, every foot or so, alternating sides on each run. And now that's a pretty overkill ridge beam for what this is. One more thing I did before the sheeting goes on is I used a bunch of rolls of this steel strapping and just screwed together a bunch of the studs with diagonal angles just for some lateral support. I don't know how much this is actually going to stop it from moving, but I've seen lots of people do this in other videos, so I thought I might as well. To be honest though, the steel is pretty flimsy and I think the plywood would offer more lateral support as long as it's nailed properly, but for the price this costs, better safe than sorry, I guess. But here's a good clip of how much a stud moves that's supported at 2 points, and one that's not supported at all. Now the next step is I'm going to install the sheathing around all the walls. I'm just using some 1/2 inch standard plywood. You can use OSB if you want, it's a little bit cheaper. I just prefer plywood because it seems more soundproof and rigid, and it just feels like a better constructed home when you're inside it. And then we just set the sheet on that little 1/2 inch ledge we left when we put on the walls, and just tacked it in place with some 2.5 inch framing nails. Then we just started filling in all the rest of the sheets. Also, thanks to my brother who was around because this is definitely not a one-man job, and he helped out whenever I needed some extra hands. So sheathing actually doesn't get put on tight, it has a slight gap between all the sheets. So I just use one of the nails, which is about 1/8 of an inch thick, to space the gap between all the sheets. To permanently nail off every sheet, I would go 4 inches between each nail around the perimeter of the sheet. And on the interior studs, I'd mark a line with the level, and then follow this line with nails every 6 inches. Seems like a lot of nails, and it is, but this is really what gives everything its strength and stops any shear forces. Or at least so I'm told. I really don't know. I've never built anything even remotely close to this before, so keep that in mind this whole time. The second layer goes on pretty much the exact same way as the first. You just gotta remember not to end your sheet on the same stud so that all those gaps are offset. And we'd also use some spare nails to maintain that 1/8 inch gap around every edge of the sheet when we're setting the top layer in place. There's a few ways to cut out the windows now, but the easiest method I've always found is to drill out the corners with a drill bit. And then from the outside, I'm going to use this palm router and this flush trim router bit. And this will just cut through the plywood while the bearing on the end of the router bit rides along the 2x4 framing and won't let me cut in any further. You get an exact cut to the dimensions of the opening in the frame, and you really don't have to do any thinking at all. It's a pretty convenient way to cut out a bunch of windows in short order without doing any measuring, and these router bits are only like 30 bucks.
Oh yeah, and did I mention there's a lot of windows to cut out? I think there's like 16 or 17. Basically a full house worth of windows in 300 square feet. It was also another $20,000 for the windows, but what are you gonna do? My basement right now has 0 windows. Before I could finish up the sheathing, I had to finish up framing the top of this end wall. So I used one of the template rafters I'm gonna make up in the next step to help me get the angle that I can frame this wall to. And then I framed in the rest of this octagon window and added in some studs. One last step before I get to framing out the roof, I'm gonna add the house wrap right now. So we're just going around making this as tight as possible and just tack it into place with staples. And then wherever there's a vertical seam, we use some blue tuck tape to tape this down. Then I just cut off any excess. When you're doing house wrap, you always want to start at the bottom and work your way up. That way it has the right layering to shed water properly. Again, I'm taping the vertical seams. These horizontal seams don't need any because they're overlapped properly and the water's not going to travel uphill to get behind this. Now I'm going to cut a template truss for the steeper part of the roof. So I have this whole thing designed on the computer, so I just spit out these dimensions so I don't have to actually measure it on site. So first I set my miter saw to the angle it said, which is 33.5 degrees, and then I cut off one of the ends of this fresh 8-foot 2x6. Then I measured from the cut point as long as it said this rafter is supposed to be, and I cut a second angle at this point. Now I'm going to cut out this bird's mouth, so to do that I just measured the point where it starts. And then this drawing told me the length of each cut is 2 1/8 inch and 3 3/16 inch, so I just used a square and measured this out with the edge of the wood. And then traced the line and cut this out with my circular saw. Then I used a reciprocating saw to finish up that cut. Now as long as this fits right, this will be my template for all the other rafters and I won't have to individually measure each one, which will save a lot of error. And it looks like it's sitting along the ridge beam at the perfect angle and sitting nicely on the top plate, so this looks like a good template. So I took it down and traced it onto a bunch of fresh 2x6s just to make a whole bunch of these rafters. It's important when tracing these that you always use the same template piece and even have the same face up so that you're always tracing that same edge. Now before I install these rafters, I have to mark out the placement, so I'm just marking out the ridge beam every 2 feet on center. And I'm putting the tick 3/4 inch offset so that the center of the board will be right on the 2-foot mark. And same thing with the top plate. Now I can just start installing all of my pre-cut rafters. To mount these onto the ridge beam, I'm using one of these Simpson rafter ties and screwing it in with some structural strong tie screws. And that's as easy as it is to set these rafters into place. To attach each rafter onto the top plate of the wall, I'm using these Simpson truss screws.
And these just replace our hurricane strap, and they're a lot quicker option and not that much more expensive. So they come with this little guide, so I just set that in place and then start the screw. And then remove the guide and keep sinking this screw until the head isn't protruding out anymore. And that's all we need to secure the bottom of each rafter onto the walls. That's now a structural connection. At least that's what the guy at the hardware store tells me. I really have no experience doing any of this. Now I'm just making up a template for the second portion of the roof, and once it fits, just making up a bunch more rafters. When I got to the point that the two slopes merged, I decided to take these structural screws out because they have a pretty big popping out head on them, and replace them with nails. And then I can just butt this second board up right against it and give it a couple screws. And then I just gave this piece a hurricane strap. Another tip, after I put up the first few pieces, I noticed that the overhang wasn't actually the exact same for every single rafter, so I actually started cutting them about 1 inch long. And then I'd just tack the rafters up with one screw, and then I'd just use a 2x4 since my preferred overhang is 3.5 inches to mark the cut line. Then I'd just take them down, cut them, and then put them up permanently, and then they all have the exact same overhang. While I was up here, I also took off those temporary chunks of 2x4 and replaced it with a steel strap. Now I set the angle on my circular saw at the slope of the roof, which is 33.5 degrees, and I ripped off the edge of a 2x8. And then I marked out every 2 foot on center and attached these little tiny pieces of rafter. Then I snapped a level line and screwed up these pieces to continue that slope all the way around this higher section of building. Then I ripped an angle into another 2x8. And I made sure the face on this piece was 5.5 inches, just because that's the width of a 2x6 and is a pretty standard measurement for getting fascia later on. And then I screwed in these little brace things I made up since I'm working alone today. And I nailed these boards on as the fascia board. Notice I left a good couple feet overhanging out the end of this board, and that's because I'm going to connect this with one more rafter up to the ridge beam and be the overhang of the roof. Now I'm going to create that overhang, so I'm measuring out how much that ridge beam is protruding out and then transferring that onto the fascia board. Then I'm cutting up one more rafter using that same old template, but not cutting in the bird's mouth this time. And screwing and nailing that in to be the fascia board of this gable end. Then I just squared off a line and used a circular saw to cut this board flush. At the other end, I first nailed on this rafter that has a couple of these ribs coming out.
And then I added on that last rafter as the gable end. Then I have a rafter for the lower slope part, and I'm just tacking this on to the end and then screwing this on to the face of the rafter below it. Then I went up top and just traced this line and then took the board down to cut this with my circular saw. Now I can take this board back up and nail it in permanently at the end. And then this is just sitting on the rafter below it, so I'm just going to nail it snug onto that. Now on each of these overhangs, I'm just adding a couple pieces of blocking that extends into the frame of the roof, just a stud or two, and this will just give it a little more support on that overhang. Then I also added these couple boards as a rough opening for a skylight that's going to be right here. And I also had to frame in these tiny little walls where the slope in the roof changed. And that's the entire framing for this tiny house, now complete. A little more sheeting and we're pretty much closed in. हेलो। हेलो रिको, ये देख रहे हो? अरे कहाँ हो? कहाँ हो तुम? मैथ कर रहा हूँ मैं। करना है सामने? ये हाँ मेरे को करना है, पर हो कहाँ तुम? लोकेशन सेंड कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट बाहर जाकर, ठीक है? तो वो पता है हाँ क्या कहते हैं, रिसाइकिल है ना, हाँ हाँ। वही उसी के पीछे एक गैस स्टेशन होगा रिसाइकिल के तो से पास में, वो उसी के सामने आ जाना, मैं वहीं अच्छा, पहुँच जाऊँगा। रिसाइकिल के सामने? नहीं, रिसाइकिल का रोड है ना। अरे उसका मिथ का तो कार्ड लगेगा। हाँ हाँ, कोई ना करे करे, अंदर ले चले जाऊँगा। आ जाओ आ जाओ। ऐसे होता है, अंदर हाँ जाता हाँ, है? होता है, को वो नहीं कहता मेरे साथ। अच्छा रुको, मैं रिसाइकिल के पास आ रहा हूँ। Alright, alright. Yeah, Rico. Yeah, hello Rico, उधर ही? अरे सुनो सुनो सुनो, Yeah, क्या? इधर आओ इस गाड़ी में, उस गाड़ी को फेंक दो। नहीं, बात है। नहीं अच्छी लग रही है मुझे ये गाड़ी पूरी। अरे नहीं नहीं, उधर देखो एक डिसाइनर सामने बैंड पड़ा हुआ है, उसको उठाएंगे चलो। ओह यस बैंड में यस। बहुत माल रहता है तो ये बॉक्स में। ओके ओके ओके। लॉक पिक है ना, लॉक पिक है हाँ ना? हाँ हाँ, एक सेकंड रुको रुको, चलो, लॉक चलो। पिक ओपन करो। रेडी करो। हाँ, रुको पहले देख ले तो कोई।
फॉलो करना यहाँ पे घुसा गाड़ी अंदर घुसा। रुक रुक अब उतना अंदर ये बता ये चेक करो कुछ नहीं है कुछ नहीं कुछ भी नहीं अरे भाई चेक व्हीकल करो ऐसे ना कुछ भी नहीं तेरी लॉस हो गया चलो छोड़ो कोई ना भाई मैं थी होता अरे मतलब होता है ना भाई के ये सब गाड़ी में ज्यादातर माल रखता है छोड़ो कहाँ मिथ लैब बोलो मार्क करो कहाँ पर मैं चला हूँ मुझे पता है हाँ ठीक है रुको थोड़ा सामने आ जाओ इधर लोकेशन में रहना उचित नहीं। अरे ये कौन था हाँ ये देख नहीं लिया ना देखते हैं अंदर ओके चाबी दे दी अंदर बैठ के हम भी धीरे से ये कुछ गड़बड़ है भाई नहीं हम भी फॉलो करेंगे अरे ये बेल्ट लगा लो रिमूविंग हो गया कहाँ गया अभी वो हमें देखेंगे हम भी वो नहीं देखेंगे इधर रुको अरे ऐसे कैसे हमें अकेले की देख रहे हैं यार हम भी देखेंगे ना ऐसी बात नहीं है वो देखिए निकले हुए मेरे को लगता है वो लोकल की कार थी मतलब जो हम लोग चुराए चुराए हो सकती है बट नहीं है लोग खरीदते हैं वो भी रेडियो ज्वाइन करें ना 1 2 3 वो देखो नहीं अरे तब मेरा इलेक्ट्रिसिटी चल गया था तब मुझे लग रहा है फॉलो करेंगे और नहीं अब भी करेंगे भागो पीछे देख रहे हैं ना आ रहे हैं अरे उन लोगों को पता है ये टीएमसी का गाड़ी है मतलब टीएमसी का गैंग का क्योंकि मैं उधर तो मेरा गैराज में पड़ा रहता है मैं आधा टाइम अरे बाप रे बाप इस गाड़ी के ट्रंक पे कुछ रख देना ताकि ओनर डिसिपेंड ना अंदर जाते इसमें से कहीं छुपा रहा हूँ यहाँ पे छुपा रहा हूँ इसमें ट्रंक में कुछ रख दो इसके इसका ट्रंक ही है नहीं नहीं है शायद से नहीं इसका ट्रंक नहीं है यू श्योर आगे से ट्रंक होता है नहीं है हाँ अरे है तो है हाँ रख दो कुछ रख दो क्या रखूँ मैं एक रिसीट रख रहा हूँ हाँ ये रिसीव रख दो बस कहाँ रहेगा यहाँ पे हूँ भैया। अरे वो गाड़ी तुम बंद नहीं किए पेट्रोल खत्म हो जाता हाँ कैरी करो चलो बाप रे बाप एक सेकंड खड़ा हूँ ऑलराइट सो इसमें जो है ना बाहर भी निकलना होगा तो कार्ड चाहिए होगा तो इधर आ जाओ यहाँ से ऑन करना है ये टर्न ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये वही वीट के जैसा यहाँ थर्ड है करके ये कितने बिकता है या ओके ये मैं दे रहा हूँ कुछ आपको 4 दे रहा हूँ मैं भी 4 कर रहा हूँ आप 4 करो गिव एंड ये गिव इसके 2 और प्रोसेस होते हैं लाइक बता दूंगा कैसे करते हैं बाद में हाँ चलो और एक सेकंड 4 नहीं इधर यहाँ से ऑन करना है ये यहाँ से हीट अप करना एंड देन वो एग्जैक्टली यहाँ से राइट में ओके यहाँ पर राइट में थर्ड है ओके जगह तो है ना हाँ है बहुत जगह है फिर उसके बाद यहाँ पे आना है उसके बाद यहाँ थर्ड आई करके ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लेता है
सिर्फ यही है एक चीज़ लंबा प्रोसेस लेना वाला। इसके ऊपर थोड़ा करना, ये जो होल दिख रहा है ये कैनिस्टर के है। साइड से देख लो। हाँ इससे होता क्या, निकलता क्या है इधर से? मैथ निकलता है जिससे लाइक यू नो जो शील्ड होती है ना वो बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब गाड़ी क्या है खुद की? नहीं खुद की होती। ये बिकता भी है? ये बिकता है। मैं उसे कोको को दूंगा, कोको शायद से पैसे देगा इसका। देखूंगा कितने देगा वो। लाइक अभी जो है ना लाइक 10 लाया हूँ तो प्रॉब्ली लाइक 40 के राउंड होगा, तो देखते हैं कितना देगा वो 40 के। 10,000 का एक? हाँ यप, देखेंगे। ये क्या बोल रहे हैं भाई? तेरी टीएलएमसी गाड़ी अराउंड। कर रहे हो क्या ये थर्ड आई करके? रिको ये थर्ड आई करके तुम्हारा शेयर? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा हाँ, कॉर्नर से जाना, अब हो कॉर्नर से जाना। गया, हो गया। एंड हाँ जी जल्दी करो क्योंकि ये सबसे टाइम लग देता है उसके बाद। एक सेकेंड, ये फ़ोन चला सकते हैं करते करते। गुड। एनी टी एल एम सी का अराउंड लिख ओके उसने लिखा है। मैं लिख दूँ? हाँ चलो चलते हैं, कुछ एक करना होगा तो। आफ्टर 30 minutes भाई ये तो बहुत टाइम लगता है। will be there। या मेरा 90 हो गया इसलिए कह रहा था। इसके बाद जो है ना एक और एक चीज़ है, वो जो लेफ्ट में दिख रहा है ना उसे वो करना है। लाइक हम 4 कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद इजी प्रोसेस। उसके बाद ब्रेक ग्लास। और ये वो यूज़ नहीं कर सकते यू नो लाइक वो जेब में जाके। राइट मेरा हो गया ये एक। एंड फिर से करूँगा मैं। मैं यूट्यूब में एक वो क्या कहते हैं एक बंदा। यूट्यूब से गाना चला दो। अरे ओके रिंकू कौन है? नो आइडिया। इज रिंको देयर? नो क्लू हु रिंको is। 3 गलती से escape दबा दिया। हाँ एटलीस्ट हो रहा है अभी भी। नाइस। फोर्टी फाइव। मेरा ये कैसे लग रहा है ये आम वाला कपड़ा मास्क। अरे इसके बाद क्या करना है? इसके बाद वो लेफ्ट में जाना। हाँ वो उसे कंट्रोल बोर्ड में थर्ड आई करके हाँ ये बना दो। उसके बाद एक ट्रे मिलेगा, उसके बाद वो ट्रे को ब्रेक करना होगा, बट अभी 4 ट्रे बना लो। या फिर से वहाँ जाके ये 3 और करना है, 3 बार और करो। फिर से हीट अप करो, फिर यहाँ बीच में आओ, फिर वो फिनिश करो। अरे बाप। 3 और बार करना होगा, कुछ नहीं। ओके मेरा दूसरा हो गया, 2 और करना है मुझे। फक फेल।
उसमें जाना स्क्वाक में मेरी प्रोफाइल देखना। स्क्वाक में। ये मार्को है ना, हाँ हाँ। उसके नीचे मैंने कमेंट दिया है, उसके अंदर जाना, अंदर मेरी प्रोफाइल देखना वहाँ से यूनिस डॉटन पे क्लिक करके। अच्छा प्रोफाइल, अच्छा खुल गया प्रोफाइल। देख अरे ले। भाई एक फॉलोअर, मैं एक फॉलो करूंगा। फॉलो फॉलो, यू आर नाउ नहीं फॉलोइंग नहीं, वो टू देख रहा है, वो फॉलो। पीछे वाला पिक्चर क्या लगा रखा है मैंने। अरे भाई मैकेनिक वाला भाई। मैं अभी नहीं देखा, मैं अभी जस्ट तुम बोलने का तो नोटिस किया। हाँ भाई। मैंने कहा अगर करना है हमें मैकेनिक तो अच्छे तरह से करता है भाई। 2 फॉलोअर्स हैं, लाइक 0। ओ मैं अपने आप को लाइक कर सकता हूँ, नाइस। आप भी डाल दो कुछ ऐसे ही, लाइक बैकग्राउंड पिक्चर। मिथ मिथ। मैथ नहीं 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 नहीं, पुलिस पकड़ ली यार, मैथ पुलिस कर पकड़ लिया। पुलिस कहेंगे अर्रो मिल गया आम है भाई। वो सोचेंगे भी नहीं, वो कहेंगे पकड़ लेंगे। वो बैनर करना होगा, ये स्क्वाड में जाओ, भाई बॉटम राइट में कल सेटिंग। हाँ क्या हो? कल से भाई पैसा नहीं जम रहा है, कुछ करना क्या पड़ेगा कल अब। मुझे जमा था बैंक रॉबरी। अरे वाह। अरे वो पैसे देते हैं, वो ट्राई करते हैं, वो जो हमें डर्टी मनी मिले है ना, वो देखते हैं हम्म। कितने का बिकता है। एक लाइक अगर 10,000 भी मिल सकता है तो सही है। ओके मेरा हो गया तीसरा, ये चौथा। कल से बस 18 लाख के पड़े हुए हैं, हम्म 1 रुपए ज्यादा ने भी नहीं हुआ। कल कितने कमाए थे? कल क्या आवाज़ नहीं आ रही? कल मैं थोड़ा कम, उतना नहीं किया। हाँ ओके ओके। कल तो ज्यादा। इसके बाद चलते हैं टीएलएमसी, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा तो चलिए। एटलीस्ट आज 3 लाख में हो जाएगा तो 20 या 21 लाख मेरा मेरा 4 लाख में 20। मेरा मेरा भी 17,40,000 पड़ा हुआ है। हम्म एक साथ दोनों खरीदने जाएंगे, पीडीएम वाले पागल। पीने वाले कहेंगे और बड़ा आदमी, सब बड़ा आदमी एक साथ दो दो ये लवाए क्या उतारेंगे। उन्हें ये भी लेके बताना है कि कितने दिन काम किया हमने बड़ी मेहनत से। नहीं नहीं, हम लोग इसमें जाएंगे, सूट वूट पहन के जाएंगे, या भिखारी के आएंगे। या कहेंगे गाड़ी दिलाओ, वो वाली लैंड क्रूजर। जैसे ही 20 हो गए वैसे ही गाड़ी खरीदी, फिर 0 हो गए। नहीं नहीं, 1 लाख रखना पड़ेगा भाई। 1 लाख रखना पड़ेगा भाई। हाँ मॉडिफाई तो हम कर सकते हैं वैसे भी, लाइक हमें मटेरियल से पता है कैसे करना है। हाँ हम ही हाँ, तो हैं वो तो हम मैकेनिक। लोग फ्री में कर वो तो लेंगे, हम फ्री में। इजीली कर लेंगे भाई, तो उसे भी दिक्कत नहीं है। नहीं, जब तक हम लोग का लीडर नहीं आता तब लोग हम लोग ऐसे ही काम करेंगे। लीडर आ जाएगा, पैसा देगा 1,000 का मटेरियल का, तब हम लोग नहीं, तब हम लोग जेन्युइन मैकेनिक। एग्जैक्टली। अरे नहीं तो हम लोग का भाई क्या फायदा भाई। ये हम लोग 1,000 करके ग्राइंड कर रहे हैं, हम लोग आके हम लोग 5,000 का कमीशन मिल रहा है, बस काम खत्म। एक्शन कॉल आ रही है। हेलो। Hello, क्या हो? where you at? मैथ कर रहा हूँ अभी मैं, लाइक बस गिव मी 15 मिनट्स, मैं अभी शॉप ओपन करने वाला हूँ एंड देन आई विल बी विद यू। तो लोकेशन दे दे, मैं आता हूँ। लोकेशन अंदर नहीं आ सकता, उसके लिए कार्ड चाहिए होगा। यू नो रिसाइकल वाला, हाँ और उसके पीछे एक गैस स्टेशन है उसी रोड में, ओके वहाँ पे पहुँच जाना, मैं वहाँ से कॉल कर देना मुझे। ओके। या एक मिनट। या क्या हुआ? ओके 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 ओके। कौन आ रहा है क्या?
ओ मेरा हो गया 4। ये लास्ट है ना आपका? हाँ उसके बाद एक जगह आना होगा। एक second। Alright, उसके बाद यहाँ पे आना होगा। हो गया 4 हो गया ना? उसके बाद यहाँ पे हाँ आके कर। एक ट्रे का जो है ना 4 ट्रे मिलेंगे। ब्रेक करना होगा यहाँ पे। अरे क्या बोल रहे थे, रिक्वायर्ड आइटम नॉट फाउंड? कहाँ, इसके पहले कहाँ करना है? रिक्वायर्ड आइटम नॉट फाउंड मतलब? ब्रेक द मीथ, और यहाँ पे हाँ ब्रेक द यू मीथ। डोंट हैव रिक्वायर्ड आइटम। ओ हैमर चाहिए। एक सेकंड ये मेरे को एक सेकंड रुको। ये उसके लिए ये लो गिव। उसके लिए हैमर चाहिए। अच्छा। ये 16 मिलेंगे। उसके बाद 16 को यहाँ पे करने होंगे एक एक करके। 4 ट्रे हो गया ना वैसे इन्वेंटरी में? हाँ हाँ हाँ। नाइस। अरे इसमें यूट्यूब भी चलता है? किस में? फ़ोन में? हाँ। हाँ हाँ वो लिंक डालनी होती है आई थिंक। नहीं, बिना लिंक का तुम सर्च करके चला सकते हो। व्हाट? कुछ भी चला सकते हो, जो यूट्यूब में दिखता है वो इधर भी चला सकते हो। ये नहीं पता। गजब है भाई।
अरे ये भी डोंट क्यों दिखा रहा है? प्लास्टिक बैग चाहिए क्या? ओ हाँ हाँ एक सेकंड ये लो कितने हुए कितने चाहिए मतलब 18 हुए ना 16 तो है, 16 होंगे, 4 4 तो 16। नहीं ट्रे कितने वो ट्रे विद एक स्मैश ट्रे में चार चार निकले। तो कितने हुए 16 हुए ना हाँ। ओके 16 और ये 16 बार करना हुआ ये यहाँ पे देखना है ये ये वेट कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो। हाँ कौन भाई? धक्का तो मेरे को ही नहीं पता, रुको इसको पूछा था। हेलो हेलो। क्या हो ओए, अरे वो गाड़ी पलट गया, उसको ये कैसे करते हैं? सीधा कैसे करते हैं? सीधा कैसे होता है फ्लिप व्हीकल लाइक टी सर्च फ्लिप व्हीकल फ्लिप व्हीकल, फ्लिप व्हीकल। टी में, टी में। हाँ हाँ हाँ। गजब है भाई। अरे ये क्या हो रहा है? ये वो बहुत सारे डब्बे आ गए यार अरे की गो ये तुलचर कम झांच। क्या हो गया अरे बाप रे बाप, क्या मिर्ची उर्ची लगा। ये चूल्हे में होता है ये मेरा नहीं हो रहा है इधर से, पूरा कैसा हो रहा है? हेलो, मैं जिंदा हूँ? हेलो 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 हेलो। हेलो हाँ हाँ जिंदा हूँ। अरे मेरा कुछ हो नहीं रहा है। ये थर्ड आई करके व्हाट मतलब वो बक्स से उछल रहा है। ये मेरे में भी दिख रहा है वो ये क्या हो रहा है? और पक्ष से चल रही है लाइक हो ही जा रहा है पता नहीं लो, देख लो एक बार थर्ड आई करके इट्स फाइन चलने दो नहीं मेरा सब हो गया मेरा 24 हो गया अब आपकी बारी है हेलो ये आओ, अब हो रहा है, अब ठीक हुआ। ये इतना देर से बक्स से उछल रहे थे। अरे भी उछल रहा था भाई अब भी उछल रहे तुम्हारे? नहीं 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 मेरे पे उछल रहे थे ये तुम भी बोलो TLMC इज ओपन हाँ और हम विद इन यहाँ पे 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स। नहीं 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 अभी नहीं जब जाएंगे तब करेंगे तो वैन कितने की ली थी तुमने? वैन ऑफ रोडिंग वाली ना नहीं नहीं, नॉर्मल नॉर्मल, एक तो जो स्टोरेज वाला वैन। स्टोरेज वाली देखना वैन पड़ेगा। अच्छा हाँ तो वैन वही 22,000 अच्छा, वैसा तो वैन रखना।
Yo, hello. Where you at? You there? आ गया ना? मैं आ रहा हूँ एक No, no. रिसाइकल पे हूँ मैं. मिनट. रिसाइकिल पे आ रहा हूँ मैं एक मिनट. Fast. रेडियो है? No, no. रेडियो लेके आ जा. हाँ आ रहा हूँ मैं. मैं एक मिनट है, एक दोस्त को लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे. वाला है ऐसे भी और एक वाक्य है. हेलो, बनाना? तो अकेला है? नहीं नहीं अकेला नहीं, एक बंदे के साथ आ. इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ. नहीं नहीं नहीं, ये उसकी गाड़ी है. हाँ हाँ, 2 मिनट पार्क कर दे, मेरे साथ चल. कहाँ पे? पीछे पीछे जाना है, 2 मिनट. अब मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ. एक मिनट, उससे बंदे को पार करनी है. आ रहा हूँ. हो गया, मेरा हो गया, खत्म. खत्म. मेरे को निकाल लो इधर से. एक मिनट आ रहा हूँ. ये पार क्यों करनी? सामान सामान देना है ना तुझे? नहीं नहीं, बैठ जाओ अभी अभी डील नहीं है, अभी बात करते हैं. अरे मुझे कल पैसे आया चाहिए. बाहर. मैं व्हाट द हेक? बैंक करप्ट हूँ. आ गए बाहर? ओके आ रहा हूँ. क्या सुन रहा है? मतलब बैंक का? माइनस में जा रहे पैसे अंदर क्योंकि घुसने मैं के लिए कार्ड मेडिकल में जा लगता रहा है. हूँ. कितने हुए माइनस में? 2000. -2000. हाँ, मैंने रिसाइकल भी किया है, वो कार का काम भी किया, तूने जो बताया. अभी तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे हम वो मैथ कर रहे थे. एक मिनट रुको. अब इसमें तो ट्रंक है क्या इसमें? हाँ बैठना, ट्रंक को देखना एक बार, कहते हैं ट्रंक करके. गेटरिंग ट्रंक नहीं हो रहा है, अनलॉक करो. मैं पे क्या किया? तो गेटरिंग ट्रंक क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट द फक, ये कौन है? नहीं बनाने के लिए अरे मेरे को उठा लो, मेरे को उठा लो. नहीं हो रहा. कैरी कर लो, कैरी कर लो. हाँ. हाँ चलो चलो. सो कल हुआ क्या था उसमें? इसे रेडी दिलाया था मैंने. हो गाड़ी. अरे इसकी हुआ. ये किसी कार है? ये इसकी है, रिको. देख रहे हो भाई, मेरा ही कार और मैं ही, मेरे को उठा के लेके जा रहा है. ऐसे होता है भाई बंदे के पास 20-30 कार है, तब भी 2 सीटर में निकल रहा है. और रिसाइकल का जो बॉक्स होता है, पर बॉक्स क्या रेट है? कितने हैं अभी? 90. 90? हाँ वो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है बहुत. मैकेनिक में एक बंदा मिला, हाँ उसने कहा 65 पर बॉक्स है. भाई 80, मिनिमम 80 का लेना. भाई हम लोग 80 का भाई बेचने आता है कोई कोई बंदा, वो 80 में लेके जाता है. ठीक है, ओ तुम्हारा रुको, मटेरियल रख देता हूँ इधर. एक मिनट, मुझे रेडियो निकाल दो पहले. मटेरियल सबसे नीचे रखना है इसमें, ठीक है? हाँ हाँ रख दो नीचे. सबसे नीचे. इसी गाड़ी में रेडियो रखना है. कप लेके तुम क्या कर रहे हो? अरे ऐसे ही बस रखे हैं. अरे भाई बहुत मेरे पे अभी रेडियो नहीं है, मुझे इसे दिलाना पड़ेगा. कार में सामान सेव होता है? हाँ ये रैम्पो है ना, इसमें लाइक 360 स्पेस होता है. बट आई वुड सजेस्ट कि लाइक घर में सेव करना, अपने टेंसिल टावर में. मेरा घर है मीट खुद का भी. मीट भी इधर रख दो, मीट भी रख दो इधर. हाँ सब है, सब है. हाँ रख दो. एक सेकंड, मैं आपको दे रहा हूँ. ट्रंक सेट में मीट रख दिया, मीट रख दिया. हाँ रख. सब उधर रख दिया. पर मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है. वेल दिखाता हूँ, एक मिनट. कैनिस्टर रखूँगा एक मिनट.
ओके ओके तो आज दो दो एक ही टाइप पे गाड़ी में जाएंगे। अरे उसको हॉटर करना पड़ेगा, इसमें आ जाओ। नहीं मेरी गाड़ी में आ जाओ, मेरे पे है एक, अरे दो दो देखो, एक बार इस साइड देखो क्या हो गया। क्या हो? अरे 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 सही है भाई। चाबी देना तुम कब उस चलाएगा? वो वाला चला लो, वो वाला चाबी चला दे लो। दो, चाबी दे दो, उसमें चाबी है, उसमें चाबी। चाबी दे दो। अरे कैसे हुआ भाई ये? अरे नहीं पता मुझे नहीं, खुद कुछ है। पता नहीं है। ये वो वाला गाड़ी डंप कर देना एक। आ जाएंगे भाई। अरे नहीं इसमें घूम नहीं सकता, दो दो एक साथ नहीं घूम सकते, वो लाइक मना करते क्यों? हैं लोग ऊपर वाले। तब वो वाला डंप करके आ जाओ। पीछे रख देते गैराज में, मेरी एक गाड़ी है उसमें आ जाओ, एक ही गाड़ी में बैठो। हाँ हाँ, एक को डंप करना पड़ेगा, एक को वो वाला डंप कर ये दो डंप थोड़ा। कर रहा हूँ, डंप कर। ओह यू मीन डंप, अच्छा। हाँ डंप डंप। ये एक काम करो, पहले उसमें आ जाओ, जनरल स्टोर में से रेडियो आ जाता है। जनरल स्टोर पता ना कहाँ? क्या बोल रहे हो? जनरल स्टोर, जनरल स्टोर। हाँ चलो चलो। कहाँ जा रहे हो तुम अभी? जनरल हेलो, स्टोर। जनरल स्टोर कहाँ है? सीधा आते रहो लीजन गैरेज उधर सीधा सीधा। हो कहाँ पे अभी? हाँ आ रहा हूँ, लीजेंड स्क्वायर, पीडीएम की तरफ से आ रहा हूँ, लीजेंड स्क्वायर में हूँ। ठीक है, ये सीधा 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 ये देखिए, फॉलो एक लॉन्ग टर्म। बच गया, मेरा गाड़ी बंद हो गया। कौन सा? यहाँ पे ओके सो बनाना यहाँ से वो रेडियो लेना। बेचना कहाँ होता है? बेल्ट उतार के। वो भी जो मैकेनिक है वही खाता है, चलता है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? और उसे कह रहा हूँ, उसे रेडियो दिला रहा हूँ, बनाना। अच्छा अच्छा। ना रेडियो ले लो। ना सो इसे थर्ड आई करना and गलती से। ओए गन। इसे थर्ड आई करना टपका देंगे इधर ही। और नीचे जाके यहाँ रेडियो मिलता है ना? रेडियो नहीं है यहाँ पे, वो तो मिलेगा। इधर नहीं मिलता रेडियो, तो रेडियो मिलता है। डिजिटल में नहीं मिलेगा। नहीं और नहीं, इधर रेडियो है ना ही मेरे पे पैसा है। अरे हम लोग दे दिला देंगे। हम दिला देंगे डिजिटल टैंक। जाओ मैं फॉलो करता हूँ। वहाँ कहाँ जा रहा हूँ? नहीं स्ट्रेट, हाँ लेफ्ट से वो डोर ने बिकता है, डोर ने पहले stop करता है। ये जाओ।
यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वो नहीं है, वो तो लाइक डॉक्टर का। इधर 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 मैम इधर। ये तो डॉक्टर में घुस गया मैं गलती वही से। वही इधर इधर इधर। alright so यहाँ से मैं दिला रहा हूँ एक रेडियो। सेकंड। alright बूम बनाना। बॉक्स से क्या होता है? आई थिंक म्यूजिक गाना होता है। बजता हाँ म्यूजिक। एक तो बनाना लेके बनाना रखता हूँ। और बनाना इधर। so इसके जो ना का रेडियो रेडियो है ये रहा। ओके इसके लाइक रेडियो में जाना उसे यूज़ करना एंड कनेक्ट में जाके फ्रीक्वेंसी 123 फिर वो एरो दबा देना। फाइनली आवाज आ रही। ये बूम बॉक्स चलाता कैसे है? पता नहीं मुझे नहीं पता तो चला देंगे। रेडियो की क्या है? लेफ्ट अल्ट आई थिंक बट उसे चेंज कर लेना। बोलो कुछ और रेडियो में बोलना भाई होता ये शो ऑफ के लिए है नहीं भाई, नहीं शो ऑफ 5000 नहीं लॉस। अरे रख सकते नीचे रख सकते हैं उसे। रख कैसे रखो इसको पता रिटर्न? नहीं पता नहीं। तेरी आवाज़ नहीं आ रही बनाना आवाज़ नहीं आ रही। बिजनेस बिजनेस कर ले। आवाज़ नहीं आ रही रेडियो में। वो करता हूँ मैं बाद में। इसमें क्या रखूँ? हेलो। या एक मिनट एक मिनट। बना या बोलियो। AFK है क्या? था क्या करना कर रहा हूँ। है? मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में लाइक मुझे जाना पड़ेगा अभी। अच्छा बॉक्सेस अच्छा। अरे 280। 280 I can give you like 30,000। ओके दे दे। देखिए चले गए हैं बॉक्सेस। आवाज़ नहीं हाँ कैसे देते हैं? उसे पूरा उसे गिव करना। थैंक यू मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। आगे पूरे। हाँ हाँ अरे इसको वो चाबी दे देना, इसका दे गाड़ी दी की चाबी दे दो दे इसको। दी दे दी मैंने वो बैठ के उसको देखी। फॉलो करने मेरे को फॉलो कर लो तुम। वो वाली गाड़ी
To sheet the roof, I'm using that same 1/2-inch plywood, and I'm pretty much doing this in the exact same method that I did the walls.
भाई कौन है तू? कौन हूँ मैं? मैकेनिक हूँ। मैकेनिक है? कहाँ का मैकेनिक है भाई? और यहाँ का। बेरिंग्स का? नहीं सॉरी, भाई, टीएलएमसी का? टीएलएमसी यस। नाम क्या है? भाई आप हो कौन? नाम बताओ तुम। मैं यूनुस। मैं पुलिस वाला हूँ। हाँ नाइस। मेरे कपड़े लूट लिए हरामजादों ने किसी ने। ओके। हेलो। अरे हेलो, डीलर है आप? हम्म। व्हाट? नहीं मैं सेल्समैन नहीं हूँ। गला अटक रहा है आपका। हेलो 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 हाँ, हेलो 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 वो हेलो हेलो डीलर। हेलो। नहीं मैं खुद डीलर देखने आया हूँ भाई। आप फिर दोनों में से से कोई कोई है? नहीं। नहीं नहीं। हम्म। हाँ हाँ यार, मैं वो ट्विटर पे जरा वो स्क्वाक है ना, उधर देखता हूँ। हम्म।
ओके आ गया मैं। कुछ करना नहीं अरे है? योनस भाई क्या हाल है? भाई ठीक हूँ भाई, आपके क्या हाल है? सर जी हमारा गाड़ी करवा दीजिए ना जरा, कॉस्मेटिक्स का। बिल्कुल बिल्कुल। वो दिखाओ ना मुझे शीट। आप तो हमारे भैया से मिल के आए थे आज, हमें सुनने में आया। कौन? वो कैफे पे, याद नहीं? हाँ हाँ नहीं। खाना लिया था आपने उनसे। ओके ओके, लिया होगा मैंने बट याद नहीं भाई, नाम पूछा नहीं मैंने उन्हें उनका। हाँ, वो बता रहे थे, कह रहे एक पाजी आए थे और उनका ब्लू कलर का ड्रेस था और ऐसे ऐसे लाइक साइकिल का हेलमेट हेलमेट पहन रखा है, साइकिल का स्विमिंग का। हेलमेट? अरे जो मैं वो यूज़ करता ना, वो टूल जो होता है ना एक वेल्डिंग के लिए, तो ये प्रोटेक्शन के लिए उन्हों, उसके। उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया मेरे हिसाब से यही लगा, मैं कहा भाई पक्का यही होंगे। फ्रेंच हैट। मैं कहा ऐसी कोई लुक तो ढूंढ जैसी, सिर्फ एक को छोड़ के। मतलब तो करनी क्या अभी है वैसे तक गाड़ी में? क्या क्या क्या? करनी क्या है गाड़ी में? इसमें बस कॉस्मेटिक्स करने हैं, इसके कलर वालर चेंज है, थोड़ा बहुत एडिशंस है इसके। बस ऑलराइट। वो करने, इसके बाद एक और गाड़ी लेके आऊंगा ना। ऑलराइट, शीट है लाइक हैव द हाँ शीट मैंने चोको को दे दिया। चोक है। हाँ चोको हो रहा, वो पीछे भालू बन रहा। अरे 69। चोको इसकी शीट दियो, I'll do it। कौन से वाले का? एक काम करो, उसका मेरे पे है, तुम वो वाले का कर दो, ठीक है? एकदम पीछे देखो, एक और एक गाड़ी है, उसका कलर का देख लैंसर। लो तुम। हाँ लेंसर लेंसर, ये बताएगा। ओए मैडी बता दे उनको। ओके बताओ कौन सी कलर करनी है? प्राइमरी को बस मेटालिक ब्लैक कर दो। प्राइमरी मेटालिक ब्लैक, ओके एक सेकंड। और वो परसेंट जो है उसको फ्रॉस्ट बाइट कर देना। ठीक 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 ठीक। नहीं 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 नहीं, ये यूज कर रहे थे। भाई साहब सीधा 5% डाउन, ठीक है भाई। यार I didn't mean to। ये गाड़ी ना, यहाँ से सर बाहर निकालो, मैं प्राइमरी में आपको क्या दिखा था? रहा हूँ, एक जगह पे आ जाओ। वो वाले पे लगा लो, हेलो क्या क्या? दूसरे वाले पे लगा प्राइमरी लो, में क्या था? स्लोप शॉप मैं आराम से कर लूँगा। मेटालिक ब्लैक। मेटालिक ब्लैक। गाड़ी बड़ी सही। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ एल्यूमिनियम लाके। अच्छा जी, पर्सन में क्या था? फ्रॉस्ट बाइट। फर्स्ट वाइट, ओके। सॉरी, फर्स्ट वाइट कौन सी कैटेगरी में? मैट, मेटालिक? मेटालिक। मेटालिक में है।
ओके। अच्छा जी, और कुछ था या इतना ही था? हेलो। हाँ इतना ही था, इतना था, हो गया। अच्छा जी, आपके 10,000 हो गए। शुड आई बिल यू? अरे इनको दे दिया मैंने ओ, ये दे दिया, कोको। ओके। इनको इनका हो गया। या हेलो बनाना। यूनुस क्या कर रहा है? कुछ नहीं, टीएलएमसी में हूँ। वो तुझे अपार्टमेंट पता है? कौन सी? ये ये, अपार्टमेंट अपना जीपीएस खोलना एंड नहीं देन। नहीं, इलनेस फिलनेस। हाँ वो पता है मुझे। हाँ कुछ 3 बंदे से बाहर खड़े हैं, मैं अंदर हूँ अपार्टमेंट में। हाँ। तो वो 3 बंदे मैं इंतजार कर रहे हैं बाहर निकलने का। ओके। मुझे शायद किडनैप करना है, तो तू आएगा क्या? मैं तो मैकेनिक का काम कर रहा है यार। तो तू आओ। चाहता है किडनैप हो जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता तो किडनैप हो, बट लाइक किसी को भेज दे यार। कोई वो नहीं है। तीनों इंतजार कर रहे हैं। एक काम वही। कर। चल ठीक है, मैं मैं एक फंस काम। गया नहीं नहीं, रूम एक में काम हूँ। कर, मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे अपनी कटाई सी कार में। एंड हाँ। जैसी जैसी पहुंचूँ, रेडियो ज्वाइन करो पहले, 1 2 3। वो पर मेरा आवाज नहीं आएगी तुझे। यार उसे वो फिक्स कर लेना, वो देख के। अच्छा, ये कॉल काट रहा हूँ, मैं जैसे ही पहुंचाऊँ कॉल करूँगा, वहीं ऊपर रहना अपार्टमेंट में। हाँ हाँ। हेलो। हाँ क्या? आई डोंट थिंक कोई नीचे, एक सेकंड, लॉबी चेक कर लो, आ जाओ नीचे आ जाओ। और भाग के आना मेरी गाड़ी में, लाल कलर की गाड़ी है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। बैठना बैठना बैठना। आई डोंट थिंक यहाँ कोई है, वो चले गए। बेल्ट पहन वो लो। सब नंगे थे। किसी ने टी शर्ट नहीं पहनी थी। हाँ। 3 थे। क्या कुछ किया था उनके साथ, या क्या हुआ नहीं, था? मैं जब एंट्री लिया था, नहीं जब मैं पकड़ रुका तो ऊपर से पकड़ 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 पर मैं अंदर भाग गया। सही है, सही है, सही है। फिर मैं सामान रखा, हाँ कपड़े चेंज किए, बाहर आया तो तीनों वही खड़े हैं रोड पे, इंतजार कर रहे हैं मेरे बाहर निकलने का। वो भी चले गया मैं अंदर। वही। फिर तुझे कॉल दिया। सही है, मैं काम कर रहा था वहाँ पे मैकेनिक में। तुझे तकलीफ दे दी। नहीं 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 नहीं, it's fine। हाँ, तकलीफ ही थी कुछ। अच्छा ये वो कार है ना? कौन सी? लाइक। मैकेनिक की कार है। ओह शिट शिट। हाँ हाँ, वहां से निकलती है। मुझे कीज दे दे, तू चले जा। तो अगर पुलिस ने रोका तो क्या कहोगे? चोरी की है? पुलिस मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी। ओके, ये चाबी लो। हाँ, एक मिनट एक मिनट। मास्क पहन ले तो तुझे तो डर लग रहा है तो। अरे नहीं नहीं, कह देना कि चुराई है मैंने यहाँ से, अगर पकड़ लिया तो, पकड़े गए तो। डैशबोर्ड का कलर ब्लैक। ब्लैक मैट मेटेलिक। मेटालिक ब्लैक। कुछ करानी है यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं। Fuck does this, bro?
रास्ते से। कुछ रानी गाड़ी में? हाँ हाँ रिपेयर रिपेयर। सुनो ना, एक ऑफिसर आएंगे ठीक है, उनका पेंट यहाँ का पे मैं एक यहाँ कर पे दियो। लिखना। ओके कर दूंगा। एक पेंट कर दियो और बाकी तुम देख लो ठीक है पेंट का। Alright, और उनको चार्ज कर देना 10K तुम्हारे 10K. उसमें कर दो। हाँ Alright. कितना लगेगा इसमें रिपेयर का यूनिट? let me see. लॉक्ड है बे यार। मैं अरे लॉक्ड है भाई, फिर से लॉक्ड है, फिर से लॉक्ड है। ओके देखने दो, डैमेजेस देख रहा हूँ, जिसके बाद ये और डैमेजेस देख रहा हूँ। राइट अरे 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 भाई सब कुछ खराब है इसका तो। हर साल कुछ कहीं नहीं किए हैं, पता नहीं लेके निकाले बस ये सब हो गया, पता नहीं। भाई सब कुछ खराब है भाई। भाई मत कर भाई 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 ऐसा। 10,000 हो गए, 10,000 होंगे। ए भाई काम कर थोड़ा, ये मेरे भाई काम कर। 6,000 फिर। हाँ ठीक है चल। ठीक है ओके, अगर हाँ 6,000 मना कर। करता ना मैं कहता भागो यहाँ से। ना ना कर दो। ओके ओके। यूनो जी कौन सा गाड़ी बस बताएगा? तुमने क्या रिपोर्ट डाला, सेम कुछ कार। डाला है क्या? किसमें हाँ रिपोर्ट? पता नहीं, पीडी को किया कुछ गाड़ी चोरी का? नहीं मैं क्यों डालूंगा रिपोर्ट? पता नहीं। पुलकित भाई पूछते अभी किसी कोई तो रिपोर्ट किया उनकी गाड़ी का कुछ तो पीडी पे की चोरी हुई है करके। हाँ हम पुलकित की किए थे गाड़ी गाड़ी। चोरी हुई है? अरे हम कह किए रहे थे रिपोर्ट, हम किए थे अपना गाड़ी का रिपोर्ट की वाला का। ये वाले का। हाँ कल किए थे लेकिन आई आज नहीं बैगन किए हैं, कल किए। ओ अच्छा, तो कुछ मिला सस्पेक्ट? ये क्या मेरे वो तो पता ही था हमको कौन लिया था, लेकिन बता नहीं सकते थे ना कौन लिया था, समझ रहे हो? समझ गया, वही वही। वैसे गाड़ी का हैंडलिंग अच्छा है। इसलिए हम वो कर दिए ना, कहे कि फिर हमको सब रिपोर्टर आए तो सब हमको बोलने लग रहा है तो गाड़ी दी जाएगी वो, इसलिए जाके हम कर दिए। हो गया काट ले कैश 209 आप पे कैश है? नहीं कैश मुझे दे दो ऐसे ही। दे। हाँ मेरा है 194, ये देखो 194। मेरा तीसरा क्यों नहीं आ? नहीं वो तीसरी आग थोड़ा सा लेट आती है, वो कई बार होता है। दे दिए यूनिट। हाँ दिख गया शुक्रिया। एंजॉय योर न्यू राइड। वैसे वो कौन सा कार है ब्लैक वाला? कौन सी है ब्लैक वाली? नो आइडिया, लैंसर हाँ है ये। कितने का है? तो बिटकॉइन ईडीएम आई है। थिंक है। हाँ कुछ रानी गाड़ी में सर? भाई साहब इधर इधर देखना है गाड़ी में अपग्रेड क्या नहीं है। अपग्रेड एक सेकंड। इट्स लॉक्ड है सर। हाँ भैया लॉकड है। एक हाँ ये लो एक सेकंड बैठ के देखूंगा लॉक। अब सही एक मिनट। ये लो। इसमें सब कुछ डला हुआ है, बस ड्राइव शाफ्ट, सिलेंडर हेड, बैटरी डाल दो केबल, ना, फ्यूल टैंक। जो भी है सब डाल दो, बचा है। एक सेकंड। हेलो बोलो बोलो। नहीं क्या नाम है इसका? कोको। ये ऑयल पंप, ड्राइव शाफ्ट, उसके नीचे जितने भी है वो कितने का आएगा? ऑयल पंप इसका क्या परफॉर्मेंस करना है? नहीं परफॉर्मेंस में सब कुछ हो गया है, बस वो नीचे का जो ऑयल पंप वगैरह होते हैं लाइक यू नो। अरे सीन क्या पता है, वो है ना ये ईडीएम है। तुम बाय करके कर रहे हो कि क्या करके कर रहे हो ये बताओ। इनका नहीं पता मुझे। क्राफ्ट नहीं मैं कह रहा हूँ क्राफ्ट करा है कि वहाँ से बाय करा है? नहीं क्राफ्ट क्राफ्ट करके करा। करूँगा। हाँ तो सही है फिर। इसका 1,75,000 है। नहीं आई मीन परफॉर्मेंस सब कुछ हो रखी है, बस मुझे वो डालनी है ऑयल पंप वगैरह अरे उसके वो नीचे। ठीक है, रुको सिंगल का बता रहा हूँ, रुक जाओ। ओके देख के बताने दो मेरे को, पता नहीं है, मैं भूल गया। सिंगल का मेरे को नहीं आइडिया है वैसे। शुड वी चार्ज जस्ट लाइक नहीं वैसे अपने मन से नहीं कर सकता ना भाई, रुको देखने दो। पता है यहाँ पे कहीं पे तो होगा प्राइस लिस्ट। हाँ मिल गया। ओके ओके इसका क्या क्या है बताना मेरे को, कौन से चीज़ों का ऑयल चाहिए? पंप, ऑयल पंप 10K, ड्राइव शाफ्ट 10K, सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड 10K, बैटरी, बैटरी केबल के 10K, फ्यूल टैंक 10K। सो 1 2 3 4 5 50K होगा।
हेलो सर जी 50,000 होंगे सारे। कर लो कर लो कर लो कर लो। सर जी आप एक बार वो दबा सकते हैं मुझे? क्या? सर जी आई एम हैविंग अ स्ट्रेस। अच्छा प्लीज। ओह जोरावर भाई मुझे भी दबा दो। अभी क्या हो थैंक यू रहा है? सो मच अभी क्या हो सर रहा जी सर दबाने के लिए। यू आर द बेस्ट मेडिकल। थैंक यू। आई अरे हेलो जोरावर भाई हाँ हाँ दबाओ ना। परफॉर्मेंस ऑयल क्या है पंप। तेरे पास दबाने के लिए? है? अरे सुनो ना यूनुस, क्या हुआ क्या हुआ? कह रहे थे 6 हार्नेस अगर लेंगे तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा? हार्नेस भाई ये 50,000 का 100 आता है यार, 100 100 उसके लिए 100 देखूंगा मैं लेंगे 100। हार्नेस। अरे इनका करने दो पहले, उसके बाद देख रहा हूँ। अच्छा वही नाम रखा बंदे ने, वाह वाह। भरवा भरवा अच्छा ये ना फिर। कहाँ है ये? ऑयल पंप। ऑयल पंप कहाँ है? फ्यूल टैंक। ऑयल पंप। प्लास्टिक 20। For fuck's sake. Okay. Oil pump drive shaft, cylinder head. Cylinder. 30 steel. हो गया क्या सर? बस 1 मिनट। हाँ हाँ 30 steel. Cylinder head, battery cables. 30 rubber. बैटरी केबल्स। सर जी बस 1 मिनट आ रहा हूँ, ये रबड़ लेके बैटरी केबल्स के हाँ लिए। हाँ 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 Battery cable rubber. Oh, for fuck's sake.
बोल 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 कुठे आहे तू कुठे आहे तू आलो 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 डॉक्टर आपकी गाड़ी हो गई मैं हेयर से मैच करेगा। हाँ हाँ जाओ। इसका हेयर पर्पल छोड़ना है। So 50k हाँ हाँ बैंक कट कर कर सकते दो हो 94 बैंक बैंक 94 सर जी आप वो कर सकते हो कार्ड से लाइक फ़ोन से सेंड मी थ्रू द पेपाल बताओ। पेपाल है 194 अगर मैं शॉप में डिटेल्स दे दूँ तो मैं शॉप के लिए पैसे करता हूँ बट आई हैव टू लाइक अर्न समथिंग ना नंबर दो आपका 194 नंबर दूँ माय बैड ये लो नंबर दे दी मैंने अच्छा यूनुस तुम हो या मैं EMS में था पहले XEMS हूँ समझ गया वो मैं Yeah. कितना 50 you'll get like tax I think 5,000 I think I don't know 2,500 thank you very much enjoy your new ride रिपेयर भी कर दो गाड़ी एक बारी let me check it's fully repaired I think आपको 2-3 दफ़ा ठोकना हो I don't know हाँ बोलो बोलो it's fully repaired for me it shows अरे ये बॉडी कर दो रिपेयर हल्की सी देखो टुकी हुई है ओके तो ये चाहिए 1 मिनट मैं भी मटेरियल्स नहीं था ओके ना माइंड repairing the body there you go अभी भी ठुकी भी लग रही है बट इट्स फाइन this is an off-roader or a street car ओए मेरी गाफ गई भाई मेरे वैन ढूंढ रहा था अंदर यहीं पे है अच्छा वो ब्लैक वाली वैन मेरी अंदर है जस्ट यू नो you need anything just ask for the materials ओके ये मेरे को खोल के रखना है भाई नहीं तो बार बार खुलता रहता है नहीं खुलता रहता है ऐसा सीन है इसका दिमाग खराब हो गया I think बंद होगा या क्या नाइफ रेंच वगैरह कुछ है खाने को हो गया आपका ये नाइफ चाकू या रेंच वगैरह कुछ है क्या चाकू या रेंच नहीं बल्ला है दे दो मेरे पे
हाँ चाकू दो, मारना चाकू। किसको चाकू नहीं मारना है, चाकू नहीं है, बल्ला है। रेंच दे दो, रेंच। रेंच भी नहीं है, रेंच अरे शार्प भाजी नहीं है, है क्या फिर? टॉर्च है। अरे नकल क्या? से, ये लो ये लो, ये बेटर है। हाँ यार, इसका ट्राई करता हूँ। ये पहना जाएगा ना? ये पहनो पहनो, हाँ वैसे लाइक, हाँ ये वही ना पा। बा- मार क्यों रहे हो उसे? अरे इसको लूटूंगा। ये हरामखोर है साला। जब देखो नहीं काम कर रहा क्या? अरे एक चीज़ है मेरे को शायद। नहीं मर रहा बंदा। नाइस। अरे नहीं, ब्लीड कर रहा है, bleed। हाँ don't. Oh. No, no, no. दिख क्या एक मैं ले रहा हूँ। क्या हो गया? फिर से ठीक करानी है क्या? ना फिर से तो फिर पैसे लगेगा, पार करके निकालूंगा तो सही हो जाएगा। ये नया है, ये पूछ रहे थे, ये सब वो है। हाँ ये घूम नहीं रहे थे बता हम। दो। अरे एक मिनट। अरे 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 ऐसे एक्शन देखने दो, मगर कर सकता हूँ फ्री में तो। अरे हो जाएगा, इंजन कर रहा हूँ, बॉडी कर नहीं है, एक ही एक लग रहा है। और मैकेनिक साहब का नाम क्या है? इनका यूनो चोको चोको चोको। अरे पुलकित भाई उनको मारो जरा, मेरे को ट्रंक से सामान नहीं निकालने दे रहे, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। एक सेकंड भाई। Alright, हो गया सब। हेलो सर जी। हेलो। या एक मिनट रुकिए, मेरे को कुछ पूछना है। पूछो। उसका नाम क्या था, रुको एक मिनट देख लेता हूँ मैं पहले। हाँ, रिंकू मिश्रा यहीं पे काम करते हैं ना? रिंको नो क्लू कौन है वो। ये क्या है, आप तो मैकेनिक है यहाँ का? ये मैकेनिक हो। तो रिंकू मिश्रा को नहीं जानते? आपका ऑनर कहाँ है इधर?
ओनर बिल्डर साउंड है बट अभी लाइक उसे उससे मिलवाता हूँ, एक मिनट आओ इधर। हेलो नहीं हाँ नहीं अशिलाला पहचाना क्या? कोको एक अरे एक मैं बात बंदा कर रहा। बोल रहा है रिंको के बारे में, बात कर लो उससे। इस बंदे से अरे बात वड़ा करो। पाव दिया था आपने मेरे को खाने हाँ को। बोलिए। हाँ हाँ, रिंकू मिश्रा को जानते हो क्या? अरे ये नहीं भाई है वो यार, पर हाँ, याद वो नहीं क्या? मेरे को इंसान नहीं भूख हो लगा था वो जानवर है। टाइम पे, अच्छा मरने ही इंसान वाला बोल था रहे हाँ आपने। हेलो। लास्ट मिनट पे आके वड़ा पाव मेरे को खिलाया। अरे इधर आओ, इधर बहुत बहुत सही है। ए पुलकित हाँ ए पुलकित बोल तीन अरे दे भूल गए क्या आप मेरे को? तीन देना मैं बोला था आपका वड़ा पाव में वापस करेगा। मेरा वड़ा पाव वापस अरे करें। वो अंदर अरे के भाई किधर तुम है? तो यहीं पे हो यार, यहाँ पे और वहाँ पे आपके देखो शहर पे यार। मैं कब से भाई ढूंढ ये रहा। रहा बंदा, ये रहा। फोन में क्या? क्यों बात कर रहे हो? कौन सी ये कौन सी हम लोग फोन में क्यों बात कर रहे हैं? यहीं पे तो हो। अबे ये रहा बंदा, ये गाड़ी में बैठा हुआ है। मैं वही सोचू चिल्ला कौन रहा भाई। अरे क्या जरूरत थी भाई, क्या जरूरत थी? अबे नंबर दिया करो बे अपना। है चाहो नंबर नहीं मेरा है? नहीं है, नंबर दिया कर, नंबर दे। रुक जा वो नहीं हो रहा। वाह मोस्ट प्रॉब्ली। ये गाड़ी। हाँ नहीं नहीं, वो गाड़ी आपको फिर यहाँ पे दिखी नहीं होगी ना, यहाँ पे जब आप वापस आए हो टीएलएमसी पे। अरे नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, सुनो, मैं ला था और ये इससे हार्नेस लगा के चला गया था। अब चले तो गए थे। उस हाँ, उसके बाद मैं आज आया हूँ, क्या? समझ रहे हो? तो तेरा आज मैं गाड़ी में देख रहा हूँ कि उसका ये रहा।